Hello to everyone. We will start the webinar in a few minutes. So please stay with us for the next following 2-3 minutes, and we're going to start the webinar. Thanks you all for joining us at the live webinar. So we're going to start right in a bit. Okay, Ben, I see some interesting questions in the Q&A window. Guys, please use the Q&A for any questions that you might have during this webinar. We will address the questions. We will try to answer all the questions by the end of this webinar. हेलो ऑल ऑडियंस, वेलकम टू दिस वेबिनार। शून्य आप लोगों के लिए वेबिनार्स लेके आता रहता है जहां पर आप मार्केट की लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी मार्केट में एक अच्छी प्रेजेंस बना सकते हैं और मार्केट में हम एक अच्छी जर्नी जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आज का जो वेबिनार है वो आई नो फर्स्ट जो AI पावर्ड प्रेडिक्शंस के लिए फेमस एक टूल है, एक कंपनी है जिसके साथ शून्य और आई नो फर्स्ट का कोलैबोरेशन है, जिसके थ्रू आप लोगों को मिलती है इनसाइट्स मार्केट के बारे में। आप जान सकते हैं कि बाजार किस तरह से परफॉर्म करने वाला है आगे आने वाले दिनों में। सो Q&A सेशन भी है यहाँ पर, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर डाल सकते हैं और जिनके आंसर्स जो हैं हम आपको इसी वेबिनार के एंड में देने की पूरी कोशिश करेंगे। होप सो आप इस वेबिनार को एंजॉय करेंगे, काफ़ी इंसाइटफुल होगा। मार्केट की आपको नॉलेज मिलेगी और किस तरह हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और आसान और अच्छा बना सकते हैं, वो हम इस वेबिनार में जानेंगे। वेबिनार हिंदी में मैं आप लोगों के लिए पूरा ट्रांसलेट करूंगा और यारोन सर, अभी ओवर टू यू, इट्स नाउ प्लीज। Thank you, Kashav. Yes. It's great to see you. It's great to see so many participants today here in this webinar. In order to be able to manage this webinar in a smoothly way, as Keshav said, please use the Q&A window for any questions that you might have. By the end of this webinar, we will address all the questions. Hello, Ben. Hello, Yaron.
Hello, Keshe. We are ready to start the webinar today. We have a very interesting webinar. We're going to talk about the forecast, how to read the forecast, and some interesting forecast that we have from the last month. And we're going to see at the end of the webinar what's the algorithm thinks about the future, about the Indian market. So you better stay tuned. सो गाइस हमारे साथ इस टाइम यारोन और बैन हैं, दोनों इजराइल से हैं. एंड यारोन इज द को फाउंडर ऑफ आई नो फर्स्ट, और बैन जो है वो आई नो फर्स्ट के रिसर्च डिपार्टमेंट हेड करते हैं. सो हमें पूरी इंफॉर्मेशन आई नो फर्स्ट के बारे में और मार्केट्स को आई नो फर्स्ट किस तरह से प्रेडिक्ट करता है और उन प्रेडिक्शंस को हमें किस तरह से रीड करना है, किस तरह हम सिग्नल्स का यूज कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस का कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो सारे इनसाइट्स जो हैं आपको इस वेबिनार में जानने को मिलेंगे. और इट्स ओवर टू यू बेन. Right, so let's start. Okay, great. So I will, it's great to see so many participants in today's webinar. In this webinar, we are going to talk about the very interesting partnership between I Know First and Shoonya. We will talk about artificial intelligence, how we can utilize artificial intelligence in order to identify opportunities in the Indian markets on a daily basis. Please stay until the end of the webinar. We have some very, very interesting surprises that we prepared for you guys in order to illustrate the capabilities of the AI algorithm. I will start with a quick introduction of I Know First and the product. So I Know First. We are AI fintech company. We are based in Tel Aviv, Israel. Our main solution is a predictive algorithm that basically generates daily prediction for the financial markets and identifies the most promising investment opportunities. We are utilizing artificial intelligence, more specifically machine learning, deep learning, artificial neural networks to predict the financial markets and to identify opportunities. Our predictive algorithm is generating daily prediction for over 30,500 assets, including equities, but also ETFs, commodities, currencies, cryptocurrencies, interest rates, with daily prediction for multiple timeframes, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges around the globe, including the stock exchanges in India, but also other stock exchanges, the US stock exchange, the European stock exchange, basically every significant stock exchange across the globe. सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आइनो फर्स्ट के बारे में कि आइनो फर्स्ट किस तरह से काम करता है. आइनो फर्स्ट जो है डेली प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स प्रेडिक्शंस देता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, और ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करता है. अभी हम इंडियन मार्केट में बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करता है जो कि अच्छा पोटेंशियल रखते हैं अपसाइड जाने का, या फिर जिन स्टॉक्स के अंदर हमें आगे आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा डाउनसाइड्स देखने को मिल सकते हैं. तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके हमें मार्क करके देता है, और ये यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल एआई का जमाना है. सभी फील्ड्स में आजकल एआई यूज हो रहा है. चाहे हम फार्मा की बात करें, मतलब मेडिकल लाइन की बात करें, आजकल रोबोट्स जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं. कार्स जो है, हम ऑटोमोबाइल के देखें तो कार्स जो है वो एआई ड्रिवन आ गई हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, ड्राइवरलेस कार्स इन्हें कह रहे हैं. सो उसी तरह अब स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा रिसर्च का पार्ट जो है, क्योंकि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो अप्रॉक्स 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है, तो हम हर स्टॉक के ऊपर नजर नहीं रख सकते.
ठीक है, 5,000 स्टॉक्स को आप रिसर्च करके निकालोगे और उसमें से आप कैसे रिसर्च करोगे शॉर्ट टर्म में, वो बहुत मुश्किल काम है। तो एआई क्या है, एआई आपके लिए रिसर्च करके आपको स्टॉक हाईलाइट करके दे देगा कि ये स्टॉक्स हैं जो अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं या डाउन साइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं। आप अपनी थोरो रिसर्च उसके साथ कर सकते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट करने का काम कर देगा। आप उसको शॉर्टलिस्ट, जो भी स्टॉक शॉर्टलिस्ट होके आए हैं उसको अपने हिसाब से आप एक बार उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर लीजिए, टेक्निकली फंडामेंटली। अगर आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं देन फिर हम उसके अंदर आगे अपना किसी भी तरह की पोजीशन जो हम चाहते हैं वो क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो डेली फोरकास्ट आता है आइनो फर्स्ट की तरफ से। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, आइनो फर्स्ट जो है वो पूरी दुनिया के लिए जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहां पर प्रोडिक्शन देने का काम करते हैं। और 13,500 एसेट्स से ज्यादा ये कवर करते हैं, जिसमें मतलब स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, कमोडिटीज, करेंसीज, क्रिप्टो, इंटरेस्ट रेट्स और वर्ल्ड के जितने भी इंडाइसेस हैं सभी के लिए। साथ में जो मिड कैप, स्मॉल कैप, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सभी तरह की प्रिडिक्शंस देने का ये काम करते हैं। तो टोटल अप्रोक्स 50 ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए आइनो फर्स्ट जो है अपने प्रोडिक्शंस देता है, सिग्नल्स देता है। सो आज के वेबिनार में हम यही देखेंगे कि इंडियन मार्केट हम इन प्रोडिक्शंस का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आसान बना सकते हैं। ओवर टू यू Ben and Yaran. Okay, in the Indian market, the AI algorithm is generating daily forecasts for more than 1,500 Indian scripts on a daily basis. We are dividing those stocks into three universes: large cap, mid cap, and small cap. And here we can see an example from today, live prediction that the algorithm was generating today. We can see here the assets that the algorithm identified as an opportunity. We can see the assets are colored in green. Those are the best opportunities to buy, basically, for the specific time frame. We are looking at the short-term prediction for the 3 days time frame. On a daily basis, the algorithm is generating daily prediction for 6 time frames: short-term, mid-term, and also long-term. And to make it interesting, we can see here 2 stocks that the algorithm identified that have jumped today as we speak. The first one is Pansari Developers, and the second one is Global WEC Elicope. Both of them jumped by 5% today in the market. On the bottom, we can see a similar example, basically from 1 week ago. The algorithm identified MT and L as an opportunity, and we can see the very nice performance, over 20% performance over the last week, and more than 100% return over the last month. Okay, so the brain behind the INO first algorithm, we have a very unique team, R&D team that includes PhDs, AI and machine learning experts. This team is being led by Dr. Lipa Roitman, one of the leading experts in the field of artificial intelligence, machine learning, with over 20 years of experience. In our R&D team, we have different employees with the background of math. We have a math professor from Tel Aviv University, as well as employees with the background of data science, computer science, math, statistics, and also IDF veterans, specifically from the intelligence unit. We have today Ben Rubin here, the head of our advisory team, with many years of experience in the leading bank in Israel. I am the co-founder and the CEO of INO First. I'm also lecturing at one of the leading universities here in Israel. And I worked for several years as one of the leading consulting firms here in Israel.
In terms of clients, we are working basically with hedge funds, family offices, investment houses from all around the globe. And now the same technology that was available to institutionals is also available to you guys, and we are going to talk about that in this webinar. The same technology that was available to the leading banks around the globe is going to be accessible also to you. With Maybe you can translate. yeah, please. Yes, I will wait for last slide. One more slide up, please. या सो हम बात करते हैं अगर इंडियन मार्केट में हम इस फोरकास्ट को कैसे देख सकते हैं, तो शून्य के यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिवली ये शून्य प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. आई नो फर्स्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं. जो भी शून्य के यूजर हैं स्पेशली उन्हीं के लिए अवेलेबल है. सो आप आई नो फर्स्ट के डैशबोर्ड पे अगर हम आज ही की बात करें तो आज ही में मतलब हमें 10 स्टॉक्स यहाँ पर मिलते हैं बाय साइड के लिए और 10 स्टॉक्स मिलते हैं जो सेल साइड जहाँ पे मतलब डाउन साइड आ सकता है. तो बाय साइड जिनमें आ सकता था तो उन 10 में से 2 शेयर्स जो थे पंसारी एंड ग्लोबल, इसके अंदर हमें 5% का अपसाइड जो है वो आज ही देखने को मिला है. और पिछले एक महीने से आई नो फर्स्ट MTNL पर बुलिश रहा है और जब से MTNL पर आई नो फर्स्ट ने बुलिश सिग्नल दिखाए हैं तब से MTNL में 118% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है मंथली बेसिस पर. और वीकली बेसिस पर भी आई नो फर्स्ट का जो प्लेटफॉर्म है, जो टूल है AI, वो बुलिश है. तो लास्ट 7 डेज में भी हमें 20% से ज्यादा की ग्रोथ इस MTNL के स्टॉक्स में हमें देखने को मिली है. सो जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो पास्ट डाटा के ऊपर की जाती हैं. पूरे डेटा को एनालाइज करके ही मॉडल अपने प्रेडिक्शंस जो है वो आगे बताता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो पूरी टीम जो है आई नो फर्स्ट के इस मॉडल को जिन्होंने बनाया है वो डॉक्टर लिपा रोहितमैन, जो कि एक चीफ साइंटिस्ट हैं आई नो फर्स्ट के और को फाउंडर भी हैं. इन्हें 23 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में. साथ ही बैन जो है वो हेड ऑफ एडवाइजरी हैं और एयरॉन जो इस टाइम हमारे साथ अवेलेबल भी हैं. ये को फाउंडर एंड CEO है आई नो फर्स्ट के. और इन्होंने पहले लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ मार्केट की जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं उनके साथ काम किया है. और अब ये उस मॉडल को इंडिया में लेकर आए हैं स्पेशली शून्य के यूजर्स के लिए. सो ये जो आई नो फर्स्ट है ये एक अलग ही यूनिक मॉडल है जो कि इंडिया में अभी कोई भी आपको ऐसा AI बेस्ड फीचर नहीं मिलेगा जो कि स्टॉक्स आगे से प्रेडिक्ट मतलब आपके लिए वॉच करके दे देता हो, लिस्ट बना के दे देता हो कि ये स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप अपनी रिसर्च लगा के आगे अपने जो भी डिसीजन आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं. सो अभी क्या है कि हमने इसको Q&A सेशन भी चल रहा है. आप अपने क्वेश्चंस भी वहां पर दे सकते हैं जिसको हम जो है आपको आगे इसी सेशन के एंड में जो है जिसके आंसर्स हम आपको देंगे. तो आपका कोई भी क्वेश्चन है चाहे आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं. उसके आंसर्स जो है वो हम आपको इस सेशन के एंड में देंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अभी अगर बात करें तो जैसे क्लाइंट्स कौन कौन क्लाइंट्स हैं जो यूज कर रहे हैं आई नो फर्स्ट को, तो नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, फिनविशिया, टोटल कैपिटल, सी कैपिटल, मतलब बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर अभी आई नो फर्स्ट की प्रोडक्शंस का यूज करते हैं. बड़े बड़े फंड हाउसेस वर्ल्ड लेवल पर आई नो फर्स्ट का यूज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को बेटर बनाने के लिए. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो कुछ अवार्ड्स हैं जो आई नो फर्स्ट ने जीते हुए, जैसे बिंजिंगा, सेफ इनसम से, UBS से, और भी बहुत से अवार्ड्स हैं फिनटेक से.
जो कि आई नो फर्स्ट को मिले हैं अपनी एक अलग ही एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी इस मार्केट को देने के लिए। क्योंकि अभी अगर देखें तो स्टॉक मार्केट जो है एआई के लिए मतलब अभी एआई से इतना कंफर्टेबल नहीं देखा जाता है, पर हाँ टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं और आगे चल के हमें इसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखने को मिलेगा। ड्यू टू एआई हम अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे, अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले पाएंगे। ओवर टू यू। With one of the clients here, Meitav Investment House. This is the leading investment house in Israel, the largest one. We have recently launched the first AI-powered mutual fund that is available to the public here in Israel, and we are planning to launch several additional investment vehicles in additional regions in the coming months. दैट्स नाइस। सो यहाँ पर आपको एक मीटा इन्वेस्टमेंट हाउस करके एक कंपनी दिखेगी जो कि लीडिंग एक एआई ड्रिवन म्यूचुअल फंड के लिए प्लेटफॉर्म है। सो वो सेम अभी इजराइल में लॉन्च हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में अलग अलग रीजन्स में मे बी इंडिया में भी आई नो फर्स्ट की तरफ से इस तरह के टूल्स लॉन्च किए जाएंगे जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी एआई जो है आपके लिए सिलेक्ट करने का काम करेंगे। Thank you, Keshav. As Keshav said, the AI algorithm has received several awards from different entities around the globe. UBS, Entity Data, the Wealth Tech Forum in Geneva. And generally speaking, the AI algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, family offices, and also investment houses. We have received also several awards in India. You can find here Ben. Ben, is it you? Yeah, that's my younger version. Okay, younger. Okay, we Yeah, found the that's from glasses. from the Bombay Stock Exchange. We attended the Indian FinTech Awards in 2018. Okay. Yeah, and we are really proud to deliver and to lecture in one of the leading universities here in Israel for the third year already. And Ben is also part of the lecturing team. And Yes, sir. You want to Yes. translate? यस। सो कुछ अवार्ड्स हैं जो आई नो फर्स्ट को मिले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही साथ इंडिया में भी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इंडिया में भी आई नो फर्स्ट को इंडिया फिनटेक में हमें जो आई नो फर्स्ट है इन्हें अवार्ड मिला था। सो इंडिया में भी आई नो फर्स्ट की प्रेजेंस वैसे अवेलेबल थी, बट अब शून्य के साथ आप जो है आई नो फर्स्ट को यूज कर सकते हैं और शून्य के यूजर्स के लिए ये बहुत ही एट्रैक्टिव प्राइजेस पर ये अवेलेबल है, जहां पर आप इसका यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज जो हम शायद कभी ट्रैक ना करते हो, हमारे लिए आई नो फर्स्ट का टूल जो है वो उसे ट्रैक करके देगा और उसका यूज करके हम जो है अच्छे इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। सो फिनटेक को क्या है आज के टाइम पे फाइनेंस जो है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ 4 से 5 करोड़ यूनिक यूजर हैं जो कि हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे कहने को हमारे पास 11-12 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हो, बट लेकिन लोगों के 2-3 डीमेट अकाउंट्स भी होते हैं, मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स होते हैं। तो अगर यूनिकनेस की बात करें तो 4-5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर 5% इंडियन पॉपुलेशन भी अभी जो है स्टॉक मार्केट को लेके अवेयर नहीं है,
फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके। तो क्या है बाहर की कंट्रीज में फाइनेंस के बारे में मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर आइनोफर्स जो है अपने सेमिनार्स करते हैं और लोगों को स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज देते हैं और साथ में किस तरह आइनोफर्स उनकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकता है उस बारे में भी बताते हैं। ओवर टू यू प्लीज। Yeah, the AI algorithm has received coverage also in the international media, TV channels, leading magazines. You can find it also on a website. I will share some links in the chat, in the webinar chat window. In the website, you can find also several reviews from different entities and clients. It's also available in the website. So what do we do? Basically, we are providing two solutions to our clients. First, we are assisting clients to identify opportunities by using our AI technology. We are providing them the daily forecast as a decision supporting tool that helping them basically to identify opportunities in the Indian markets across different investment universes and also to support daily investment decisions. On top of that, we also develop second tier of our services when we basically converting the daily prediction into a systematic strategy. We are going to talk about that in this webinar as well, but the idea is basically to convert the daily product, the daily forecast, to AI-powered investment vehicle like the mutual fund that we have just launched in Israel. Over to you. यस। सो कुछ आपको मीडिया कवरेज भी देखने को मिलेगी जो आइनो फर्स्ट की मीडिया कवरेज है, जहां से आइनो फर्स्ट किस तरह से मतलब इजराइल में और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से एआई को यूज करके और इन्होंने कैसे इजी किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ क्लाइंट रिव्यूज भी हैं एआई को लेकर, किस तरह से एआई उनकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना रहा है और कितना वो उसका यूज करके और इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहे हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यस, अगर हम बात करें इसकी कि जो एआई है या जो आइनो फर्स्ट है वो क्या करते हैं, मतलब किस तरह से काम करते हैं। सो अगर हम बात करें एआई की, तो पूरा आइनोफर्स जो है वो एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। जैसे रिटेलर्स मतलब जो छोटे मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले लाइक नॉट छोटे, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में दे आर रिटेलर्स, और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स लाइक जैसे फंड हाउसेस हो गए, एएमसीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या फिर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जैसे आपको जो एफआईआई डीआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये प्रोवाइड कराते हैं। सो अगर अभी तक की बात करें S&P 500 की अगर ग्रोथ देखें तो 61% की ग्रोथ है, और अगर आइनो फर्स्ट की रिटर्न देखें इसके अगेंस्ट तो 368% की रिटर्न है। मतलब अपने बेंचमार्क से कई गुना ज्यादा रिटर्न देने के लिए आइनो फर्स्ट जो है वो फेमस है। मतलब आइनो फर्स्ट की रिटर्न्स पे जो है आपको 368% का प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू S&P मार्केट रिटर्न से, बेंचमार्क से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay. Yes, Basically, thank you very much. I'm starting to understand the language. By next webinar, I'm going to do it in Indo. Okay. Yes. Yeah, sure. Okay. The I know first predictive algorithm it includes three components. The first component is assisting us to identify the most promising investment opportunities from the Indian market, whether it's a small cap, stock scripts,
mid-cap scripts or large-cap scripts. The second component assisting us to identify the leading sectors within the Indian market, the leading indices within the Indian market, and it's also assisting us because since it's helping to identify the sectors that we would like to avoid as well. And the third component that's available to Shoonya users is actually the ability to use the AI to analyze your existing portfolio. And we are going to discuss it in this webinar as well. So those three components are available to every user that's using the Shoonya app right now. सो आई नो फर्स्ट प्रेडिक्शंस कैसे करता है? तो आई नो फर्स्ट क्या करता है, सबसे पहले तो मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कहाँ पर मतलब इन्वेस्ट करने पर आपको बेस्ट रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। सो मेनली क्या होता है, आपने ऐसा नहीं है कि एआई है तो जस्ट ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि अभी मैं अगर आपको इंडिया में किसी ड्राइवरलेस कार में बिठाऊंगा तो आप पहले तो डरोगे, तो इसलिए पहले आप उसको चेक भी करोगे कि यार ये रुकती भी है या नहीं रुकती है। तो उसी तरह से हमें एआई का भी ध्यान रखना है कि अगर एआई ने बोल दिया है कि ये स्टॉक अब जा सकता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब जाएगा ही जाएगा, आपको अपनी भी रिसर्च उसके पीछे लगानी है, ठीक है। एक्यूरेसी है 70-80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी आती है, पर लेकिन हमने अपनी रिसर्च का पूरा ध्यान रखना है। या तो हम ये कर सकते हैं कि जो 10 शेयर बताएं तो वो 10 के 10 हमने ले ली, ठीक है, फिर बात कुछ और होती है। लेकिन अगर 10 में से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं तो वो रिसर्च के बेस पे ही सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो मोस्ट प्रॉमिसिंग है वो हमें आई नो फर्स्ट प्रेडिक्ट कर देगा, उसके ऊपर हमने अपनी रिसर्च लगानी होती है, देन हमने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर आई नो फर्स्ट जो है वो इंटेलिजेंस का यूज करके लीडिंग सेक्टर्स और इंडाइसेस पर भी अपनी जो प्रेडिक्शंस है वो बताता है। लाइक आप देख सकते हैं शून्य पर और beta.shoonya.com पर आप आई नो फर्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो शून्य ऐप पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप इंडाइसेस की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है आने वाले 3 दिन से लेके 1 साल तक वो भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो beta.shoonya.com हमारा वेब पोर्टल है, वहां से भी आप आई नो फर्स्ट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। आई नो फर्स्ट एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन भी देता है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपकी होल्डिंग्स है शून्य पर, वो सारी होल्डिंग्स से रिलेटेड जो भी एआई के सिग्नल्स और प्रोडिक्शंस होंगे वो आपको साथ के साथ आई नो फर्स्ट पर ही देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी आपकी होल्डिंग्स है वो सारी आपको उसकी जो भी प्रोडिक्शंस हैं और सिग्नल्स हैं उससे रिलेटेड वो डेली बेसिस पर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। Over to you. Thank you. So how we do it, I see a lot of questions in the Q&A. Which data are we utilizing and what is the daily process that we are doing in order to generate the prediction? So the algorithm is collecting large amounts of data sets that coming from the entire financial market, the equities market, the interest rate market, the commodities market, the currency market. The algorithm is combining the daily data into our database. We are managing database with historical data. And around the clock, the algorithm is learning, building the complex network that exists in the financial market. And before each trading day, the algorithm is generating the most updated forecast for the different time frames that we see on the right: short-term, mid-term, and also long-term. This process is being done on a daily basis, and every day before the market opening, you are receiving the most updated prediction with the best opportunities for the next trading days, basically. ओके, सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें जो लास्ट वेबिनार में भी आए थे और अभी भी जो आ रहे हैं कि आई नो फर्स्ट करता कैसे, काम कैसे करता है। तो आई नो फर्स्ट जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सारा वर्क कराता है आपको प्रेडिक्शंस देने का। तो एक 15 इयर्स का डेटाबेस, ठीक है, उसको पूरे डेटाबेस को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है
उसको पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है कि आज से 4 साल पहले सेम सिनेरियो पे क्या था, 5 साल पहले क्या था, 6 साल पहले क्या था, है ना। बैक टेस्ट डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग कि हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ था, सिमिलर सिनेरियो बन रहा है। वो जितने भी सिनेरियोज हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, कितने चेक पॉइंट्स को मीट कर रहा है, कितना सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है, प्रिडिक्शंस कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से आपको जो है आई नो फर्स्ट स्टॉक सिलेक्शन का काम करके देता है। सो 3 दिन के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होती है और 1 साल के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होती है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के लिए कुछ अलग प्रोसेस है और अगर आप लंबे टर्म के लिए रखना चाहते हैं, 1 साल तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो कुछ और प्रोसेस है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 3 दिन के हिसाब से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 3 दिन के हिसाब से ही उसका एनालाइज किया जाएगा, और अगर आप 1 साल के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो उसका फिर ईयरली बेसिस के हिसाब से ही उसका सारा एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है। सो पूरा एक लर्निंग साइकिल है, मशीन लर्निंग लगी हुई है। जितने भी सिनेरियोज बन सकते हैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, हर उस सिनेरियो को डाला गया है और उसी से ही सीखा गया है कि जैसे पहले जैसे हम लोग भी एनालाइज करते हैं कि ये सेम लेवल सेम चार्ट्स जो है हमें इस लेवल पर देखने को मिले थे, ये चार्ट्स हमें ऐसे देखने को मिला था, तो यहाँ से हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलता है। इंडिकेटर बेस्ड होता है, जो भी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज होती हैं उस हिसाब से आपको प्रिडिक्शंस जो है वो दिखाई जाती है। ओवर टू यू यार सर। Thank you very much. So basically, we are combining different AI approaches into one AI algorithm. The first method that we are utilizing is deep learning, artificial neural networks, genetic algorithms, supervised and reinforcement learning. The most interesting fact about this predictive algorithm is the ability to separate and to focus on the most predictable assets from each market. So if we're taking the Indian market, the algorithm on a daily basis, filtering out the less predictable assets and focusing on the most predictable assets from the Indian markets. सो आइनो फर्स्ट जो है वो कटिंग एज डीप लर्निंग का यूज करता है। जो भी मोस्ट रिसेंट रिसर्च होती है उसका यूज करके हमें प्रेडिक्शंस देता है। अपडेट होता रहता है आइनो फर्स्ट खुद भी कि अब मतलब जैसे नई नई स्ट्रेटजीज क्रिएट होती हैं, किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई नया सिनेरियो बन सकता है, उन नए सिनेरियोज को याद रखे सेल्फ लर्निंग करता है, खुद से सीखता है और फिर हमें जो है अपने प्रेडिक्शंस देता है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स होती हैं और पूरी जो लर्निंग है वो पूरी सुपरवाइज्ड है और जो भी हमें प्रेडिक्शंस आती हैं वो सारी फोकस्ड होती हैं। सो हम आइनो फर्स्ट की प्रेडिक्शंस, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें प्रेडिक्शंस मिल रही हैं, हमें प्रेडिक्शंस के साथ साथ अपनी रिसर्च का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। हम पूरी तरह से रिसर्च करके और अपने स्टॉक्स को अपने हिसाब से फाइंड आउट करें। एक काम आसान हमारा हो रहा है कि हमें एक रिसर्च मिल जाती है कि ये स्टॉक्स हैं जो आगे आने वाले टाइम पे हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का मूव जो है वो दिखा सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक्स पर ही अवेलेबल है क्योंकि जैसे लोगों की आस्क है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ये प्रोडक्शंस नहीं दिखाता है, तो यस अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर भी प्रेडिक्शंस जो है वो ऑफर्स दिखाने का काम करेगा। तो अभी मॉडल रेडी हो रहा है, उसके अंदर भी जो है जल्दी हमें अपडेट्स देखने को मिलेंगी। ओवर टू यू आंसर। So to illustrate the daily process that we are doing, basically we are analyzing the entire Indian market. We are dividing it into three main universes: the small caps, mid caps, and the large caps from the Indian market. Then the magic is being done. The AI algorithm is using the different AI methods that we are basically using, applying predictability filter for each assets, focusing on the most predictable assets from the Indian market, and then we are utilizing the single
signal filter in order to create the ranking. And then basically we are identifying the top 10 stocks from each universe for the different time frames. So basically 6 time frames. सो जो स्टॉक पिकिंग की प्रोसेस है इंडियन स्टॉक मार्केट की 1500 स्क्रिप्ट्स के ऊपर आइनो फर्स्ट जो है वो काम करता है, ओवर 1500 स्क्रिप्ट्स सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 5000, तो 5000 शेयर्स तो सभी तो आप जानते हैं कि ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, बीएसई पे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि जिन पे किसी तरह की मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो 1500 ऐसे स्टॉक्स जिन पे हम प्रॉमिसिंग है कि यस ये शेयर्स थोड़े ठीक हैं, जिनमें लिक्विडिटी रहती है, तो ऐसे स्टॉक्स को आइनो फर्स्ट पिक करता है और उसे अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं एआई के जिन पे मशीन लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिदम्स का यूज करके स्टॉक्स फाइंड आउट किए जाते हैं। फिर प्रेडिक्टिबिलिटी फिल्टर लगाया जाता है कि किस स्टॉक की प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है। देन फिर सिग्नल के फिल्टर्स लगते हैं, किन स्टॉक्स के सिग्नल्स ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें फिर जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं बाय साइड के लिए और टॉप 10 स्टॉक्स जो हैं जो कि आने वाले टाइम पे डाउन साइड जा सकते हैं, वो हमें शो किए जाते हैं। सो उसमें ऐसा है कि ये 10 स्टॉक्स जो हैं वो टॉप स्टॉक्स होते हैं। इसके अलावा भी आप सभी स्टॉक्स पे जो कि सेम डे पे जिनके ऊपर प्रोडिक्शंस दी गई हैं, वो स्टॉक्स की प्रोडिक्शंस आप जो है शून्य ऐप पर भी और शून्य वेब पर भी आप जो है beta.shoonya.com पर ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। Okay, Ben. All right, let's talk about a little about the service and how it looks like. So after signing into the service and pressing on the IKF icon in the right top screen of the Shoonya app, you are getting into this screen. And in this screen, you can see all the best opportunities that the AI is providing you from the Indian market. So what do we see here? Basically, we're seeing stocks that are painted in green, that are, of course, present a long position, or stocks that painted in red, which represent a sell position. And you can switch between the large cap, the mid cap, or small cap. And even you can focus on the time frame that you are want to focus on, if it's the 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, or 1 year. So in this screen, basically you control all the stocks. You can see all the stocks. After pressing a stock right here, you can see the immediate return in the market of this specific stock. You can see the order book down here, and you actually can even buy it or sell it from this specific app. And in those little numbers that you see in the bottom, you can go back and forth and see past predictions and past forecasts up until today forecast. Of course, you can see the date of the forecast here in the top of the green table. And we're going to explain about the signal and predictability in just one more slide. ओके, सो आइनो फर्स्ट को जब हम एक्सेस करते हैं beta.shoonya.com के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप पर भी आइनो फर्स्ट अवेलेबल है, आप दोनों ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें जो स्क्रीन मिलती है उसमें कुछ स्टॉक्स ग्रीन में मार्क होते हैं, कुछ स्टॉक्स रेड में मार्क होते हैं। सो ग्रीन जो स्टॉक्स हैं, इट मींस कि आने वाले टाइम में हमें उन्हें उन स्टॉक्स के अंदर एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिल सकता है, और रेड वाले में हमें डाउन ट्रेंड मूव आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। सो तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो और डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 6 टाइम फ्रेम में प्रेडिक्शंस होती हैं, मिनिमम 3 डेज से मैक्सिमम 1 ईयर, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना और 1 साल।
ये 6 टाइम फ्रेम्स में आप अपने स्टॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको जो ग्रीन और रेड में स्टॉक्स मार्क है वहां पर नीचे आपको विंडोज देखने को मिलेगी 1 2 3। आप किसी भी पेज पर जाकर आप अपना जो स्टॉक है ऊपर सर्च भी कर सकते हैं और सिग्नल्स के हिसाब से ये स्टॉक्स जो हैं वो डाउन होते जाते हैं। तो आगे जो जो स्टॉक्स आप देखना चाहें जिसकी कितने सिग्नल्स हैं कितने प्रेडिक्टिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं और इसी पेज से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। बाय सेल के ऑर्डर्स जो हैं आप वो यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं और इसी पेज पर आपको स्टॉक की जो भी डेप्थ है मतलब हम अगर बात करें कि स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज के हाई लो ओपन क्लोज वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आई नो फर्स्ट की प्रिडिक्शंस और सिग्नल्स भी आप देख पाते हैं और जो मार्केट डेप्थ है वो भी आपको इसी पेज पे बायर सेलर्स की देखने को मिल जाती है। डायरेक्टली आप यहाँ से अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस भी कर सकते हैं। ओवर टू यू मैन। Thank you. Also, in this page, we can see the main indices, direct quotes from the main indices, and our total margin and credits. Another thing, in this specific menu, we can skip between AI stock picks that you see right now to main indices, to the past performance, to our portfolio holdings, and of course, to subscribe to the service. सो इसी पेज पर हमें जो है मार्केट्स क्या चल रहे हैं आज के जो निफ्टी और सेंसेक्स क्या चल रहा है इंडाइसेस वो भी आप देख सकते हैं। आपके अवेलेबल मार्जिन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एआई पिक्स में हमें ये स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो आज आई नो फर्स्ट ने हमारे लिए प्रेडिक्ट किए होंगे। इंडाइसेस का टैब है जहां से आप इंडाइसेस पे वॉच रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडाइसेस कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। परफॉर्मेंस में आप उन शेयर्स को देख पाएंगे जो कि आई नो फर्स्ट ने आपके लिए पहले प्रेडिक्ट किए थे और उनकी अब क्या परफॉर्मेंस है। तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हैं। होल्डिंग्स में जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको ऑप्टिमाइज करेगा और साथ में आपकी जो स्टॉक्स होल्डिंग है उनके ऊपर क्या सिग्नल्स और प्रोडिक्शंस आ रही हैं वो भी आपको डे टू डे बेसिस पर अपडेट करके दिखाता रहेगा। सब्सक्रिप्शन का पेज भी यहाँ पर है जहाँ से आप डायरेक्टली अपना आई नो फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओवर टू यू। All right. So, what is the two indicator that we use to focus on the best stocks that the AI provides us? We are using two indicators. The one is the signal, as we can see here, the signal. The signal represents the predictive movement of the asset or the strength of the potential movement of any specific asset, and it's going all across the board of all of the assets that we covered. And also, of course, the Indian stocks. We can see that the best stocks with the strongest signal is in the top left corner of each table, and it's going down to the right up until the right bottom stocks that have the most negative signal that represent the strongest movement downwards. So this signal is actually ranking the entire investment universe if it's a small cap, mid cap, or large cap, and we're using it to focusing on the best stocks. The second indicator is the predictability indicator, and it's located on the bottom of each and every square. We can see it, for example, in this example, the Dixon, the predictability here is 0.49. The predictability means how good the algorithm can predict the specific assets. And this Pearson correlation measurement moves from 0 to 1, while 0 represents 50% probability that the asset will move to the predicted direction, and 1 represents, of course, 100%. And in both cases, in those indicators, we are looking for higher numbers, and of course, giving a little bit more focus on the predictability. We always try to find assets and stocks with high predictability indicators. ओके सो मेन क्वेश्चंस जो हमें आते हैं हमारे क्लाइंट्स के कि इस सिग्नल और प्रेडिक्टिबिलिटी इसको रीड किस तरह से करना है, मतलब हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि किस तरह हम इसका
यूज करें और किस तरह हम इसकी लर्निंग को लें। सो सिग्नल जो है अब ये समझ लीजिए कि कितने इंडिकेटर्स के ऊपर कितने ज्यादा सिग्नल्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जिसके सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो स्टॉक आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। और जिसका सिग्नल मतलब अगर हम देखें कि इसको हम किस ऑर्डर में रखा हुआ है, तो जिसका सिग्नल सबसे ज्यादा है वो सबसे आपको ऊपर दिख रहा है। जैसे जैसे सिग्नल कम होते जा रहे हैं वो स्टॉक्स आपको उसके नीचे की रेंज में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वहीं ये बाय साइड की बात है। अगर सेल साइड पर देखें तो जिसके सिग्नल्स जो हैं वो डाउन साइड पर हैं वो हमें सबसे ज्यादा नीचे जाते हुए दिख सकता है। सो प्रेडिक्टिबिलिटी, अब प्रेडिक्टिबिलिटी से पास्ट परफॉर्मेंस जो है साइकेफ मॉडल की उसका पता लगाया जाता है कि अगर सेम सिग्नल है तो उस सिग्नल के ऊपर कितनी प्रेडिक्टिबिलिटी है। और इस मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है कि इस शेयर में आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का मूव देख सकते हैं आप, तो उसके चांसेस कितने ज्यादा हैं। 0 से 1 तक की इसकी रेंज होती है। सो 1 का मतलब है कि 100%। ठीक है, तो जितनी प्रेडिक्टिबिलिटी स्ट्रांग हैगी मतलब वहां पर उतने ज्यादा चांसेस हैं उस शेयर के उस सिग्नल के हिसाब से मूव करने के। और सिग्नल भी स्ट्रांग है और प्रेडिक्टिबिलिटी भी स्ट्रांग है, तो इट मींस कि स्टॉक जो है अपनी डायरेक्शन में जब भी सेम सिनेरियो बनता है, अगर 0.8 की प्रेडिक्टिबिलिटी है तो आप ये समझ लीजिए कि 80% टाइम जो है वो अपसाइड का मूव दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, सो ओवर टू यू। In the indices tab, we can find the prediction from different indices from the Indian market. We can find, for example, the mid cap or 150 or alpha stocks. We can also find the real estate or communication or technology indices. Of course, to all 6 time frames, this specific page is providing us the forecast on the indexes itself. In the performance tab, we can see past performance of different stocks. And in the holding tab, of course, we can see our own portfolio is being analyzed by AI, and we can find the predictability and signal to each and every asset that we hold. So after buying an asset, we can, on a daily basis, follow it and see if the signal is still good and positive, and what's the predictability of this specific asset. So this is a very an excellent tool to track our holdings. सो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इंडाइसेस भी ट्रैक कर सकते हैं कि सेम जैसे हम स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं कि 3 दिन से लेके 1 साल तक के लिए कैसा मूव कर सकते हैं, उसी तरह से हम इंडाइसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर इंडाइसेस कैसा मूव कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई से रिलेटेड दोनों ही इंडाइसेस ही प्रेडिक्ट करता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं, देखिए क्या होता है ना कि अगर हम मेटल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसके इंडाइसेस का भी वॉच रख सकते हैं। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर शेयर की हमें वहां पर प्रेजेंस दिखाई दे रही है एआई पिक्स में कि हमें कोई शेयर दिखाई दे रहा है फॉर एग्जांपल, किसी भी शेयर को हम बात कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड इंडाइसेस में भी हम देख सकते हैं कि उसका इंडाइसेस क्या कह रहा है, क्या वो भी अप ट्रेंड में है या फिर वो इंडाइसेस डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो वहां पर हमें एक डबल कंफर्मेशन रिकंफर्मेशन के भी बहुत अच्छे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। और साथ ही जो है सॉरी, सो यहाँ पर जो है हमें लास्ट स्लाइड प्लीज। यस, एनएससी और बीएससी दोनों से रिलेटेड जो भी इंडाइसेस हैं वो हम देख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी। नेक्स्ट स्लाइड जो आती है हमारी वो होल्डिंग्स की आती है, मतलब जो भी हमारी होल्डिंग के अंदर शेयर्स हैं वो शेयर्स भी हम यहाँ पर जो है ट्रैक कर सकते हैं कि उनमें आने वाले मतलब जो हमारी होल्डिंग है उस पर क्या प्रेडिक्शंस हैं और उनके क्या सिग्नल्स हैं, ये भी हमें डेली बेसिस पर आई नो फर्स्ट अपडेट करता रहता है। ओवर टू यू गाइस। Thank you.
So of course the Shoonya app is available for desktop and smartphones. You can use it while you're on a computer, of course, in your own smartphone edition. So it's very convenient. And I want to go through some recent examples from the last month. Here we can find some stocks that the algorithm provided to our clients from the July 1st, 2024. We can see the date over here, and we can find different kind of stocks with the different times, different signals and predictability. For example, if we're checking the first stock with the strongest signal that we can see here, it's 101, Wok Pharma. From the pharma industry, we can see that in the specific time frame of 3 days, from 1st of July up until the 4th of July, this specific stock made 35% return. In 3 days, this specific stock has a really high signal, as we see comparing to other stocks. And the second stock, MAS Tech, is actually from the tech industry, also have a great signal and predictability and made a 5% return. This all happened while we can see here the index itself made 1.29 return. And if we are summing the entire performance of all of this specific forecast, we can see that INO first average was 0.62. We are more than doubling the returns of the index itself, the benchmark. So it's really impressive to see and follow. या सो हम जो है स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं जो कि एआई ने हमारे लिए प्रेडिक्ट किए हैं और उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है सो हम उस स्टॉक की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस टैब में आकर और यहाँ पर भी हमें लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में क्योंकि तीनों ही कैटेगरी में हमें सिग्नल और प्रेडिक्टेबिलिटी के बेसिस पर स्टॉक्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं तो उसी बेसिस पर जो है यहाँ पर हमें उनकी जो आगे की परफॉर्मेंस है वो भी चेक करने को मिलती है तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइम फ्रेम है जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन में भी आप चेक कर सकते हैं कि 3 दिन में जो स्टॉक्स दिखाए गए थे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही 7 दिन में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही 14 डेज में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही सो वो स्टॉक्स जो है आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं ओवर टू यू बेन Yeah, in the same way we can also see the 7 time frames. Again, we always every day we have 6 time frames that you see the best opportunities from the Indian market. So here the algorithm gave us the best 8 opportunities from the 27th of June for 7 days ahead. And again, we can find the healthcare stock, for example, such as Suvenfar, with the signal and of 27 that made 11% in 7 days, and other stocks that the algorithm actually gave them a positive forecast and went up in this time frame of 7 days, and most of the stocks here actually outperform the benchmark. Yes. यस सो जो भी सिग्नल्स हमें जैसे लार्ज कैप में देखने को मिले थे अभी हम मिड कैप में भी चेक कर सकते हैं 7 डेज में अलग अलग टाइम फ्रेम में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा तो 7 डेज में जैसे किसी स्टॉक्स में कितना रिटर्न आया वो भी हम यहाँ पर जो है ट्रैक कर सकते हैं साथ में जो भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होते हैं वो सभी यहाँ पर हमें शो किए जाते हैं ओवर टू यू मैन Yeah, in the same way, we can find the forecast for 14 days. For example, Persistent, the tech company, and from the large cap universe that the algorithm gave a very positive forecast and moved 23% in 2 weeks time frame, or the 1 month time frame that we can find the best stocks for the next month. That was generated on June 4th for 1 month ahead, and we can see the returns that the stocks made
in this specific time frame. So we have 2 weeks, 1 month, and the 3 months as well. We can find the best stock for hold for the next 3 months that was generated on April, and we can see it up until today, up until the 15th of June, and see that again the average of those stocks almost doubled the index return in the same period time. And our last time frame is the 1 year time frame. You can notice that the signal and the predictability or in the longer time frames of the 3 months and 1 year are much stronger. We highly recommend to focus on those time frames, or 3 months, 1 year, and 1 month. Even if you're buying stocks for a short period of times, take a look in the longer time frames and see if you can find the stocks in the longer time frames. The signal there and the predictability, as you can see, are much higher, and the success rate is also higher. And we can see actually the return of the 1 year time frame of 131 average return that this forecast made, comparing to the 22% of the Bombay Stock Exchange Index. यस सो परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अलग अलग टाइम फ्रेम में है, तो परसिस्टेंट की परफॉर्मेंस जैसे 14 डेज में यहाँ पर जो है हमें एक अच्छा रिटर्न अराउंड 23.64% का देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्टॉक्स पे अलग जो भी हमें रिटर्न्स मिलती है वो भी ये मॉडल हमें बताता है। बेन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सो 1 मंथ का भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में हमें 24.94% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। यस सो 3 मंथ्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी का भी दिखाया गया है। अलग अलग कैटेगरी से कंपनीज आती हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। आप तीनों की ही परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में। सो 3 मंथ्स में जैसे हमें स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें 55% के सोलेक्स पर रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप नेक्स्ट 1 ईयर का भी है। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सो 1 ईयर में भी अगर हम देखें तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज में हमें 771% के रिटर्न जो है वो देखने को मिले। मतलब 1 साल पहले 16th ऑफ जुलाई को जो प्रोडिक्शन की गई थी उसके अंदर हमें जय बालाजी इंडस्ट्री में 771% का रिटर्न, प्रीमियर में हमें 347% का रिटर्न। ऐसे कई सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आई नो फर्स्ट ने जो प्रेडिक्शंस दी होती हैं उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं वो भी हम अपनी परफॉर्मेंस टैब में जाकर चेक कर सकते हैं। ओवर टू यू मैन। Yeah, and I want to focus on another forecast and the timing of the algorithm for providing the stocks. For example, with the Walk Pharma stocks in 1st of July, the algorithm gave positive, really strong signal prediction for this specific stock, and we can see what happened in the 1 week after that. You can see a big jump here. From the 1st of July, while this forecast was sent to our clients, I remind you, before the start of the trading day, and these stocks jumped in a really impressive way. Another example is from the persistent stock. Again, from the 20th of June, we see that the stocks went a little bit up. We don't see anything special in this time frames or this movement during the 20th of June. But after giving a strong recommendation from the algorithm to this specific stock, we can see that in the 2 weeks and the 1 month, the actual stock jumped over 24% since giving this recommendation. So the timing of the AI algorithm is also really important and precise for different stocks. Yeah, and this is a very good point that I see a lot of questions in the Q&A about that. You're going to receive the most updated forecast on a daily basis before the market opening. So you need to imagine you're waking up in the morning, you're turning on your computer, your PC, or connecting via your mobile phone,
and you are receiving, by using the Shoonya app, you are receiving the best opportunities for the near future, for the upcoming day, or the next week, or the next 14 days. And this forecast is being updated on a daily basis. So you have a very good reason to log into your app on a daily basis, basically. सो पहले हम बैन की बात को कंटिन्यू करते हैं. मेन चीज है कि आयनो फर्स्ट सिग्नल कब देता है, ठीक है, सिग्नल कहाँ पर दिया, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या रही. तो आयनो फर्स्ट ने वोकार्ड फार्मा का जो शेयर है वो आइडेंटिफाई किया 1 जुलाई को, ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद इस शेयर के अंदर एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, कंटिन्यू आगे आने वाले 4-5 दिनों तक, ठीक है. सो वहां से अभी पॉजिटिव है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी एक्यूरेट है, ऐसा नहीं काम होने के बाद बता रहा है, वो आपको पहले ही बता दे रहा है कि इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है. आप अपना एनालिसिस कर लो, अगर आपको ठीक लगता है आप पोजीशन ले सकते हैं. यस, मैं हमेशा बोलूंगा कि हमने कभी भी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि हाँ आंख बंद करके एआई ने बता दिया है तो हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं. नहीं, हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्केट में हैं तो एटलीस्ट हमें अपनी नॉलेज का यूज करना चाहिए. ऐसे विदाउट यूजिंग अवर नॉलेज और सिर्फ इस बेसिस पर कि एआई ने बोला है तो होगा ही होगा, नॉट करेक्ट. आप उसके ऊपर अपनी रिसर्च करके और अपने इन्फॉर्म डिसीजन खुद लें. अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जिसकी भी आप सलाह लेना चाहें उसको दिखाकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का यूज कर सकते हैं. आई नो फर्स्ट को आसान आपकी हेल्प कर देगा, आसान करवा देगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को. सो अब बात करते हैं, क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं. यस के आई नो फर्स्ट की जो प्रिडिक्शंस हैं वो कब अपडेट होती हैं. तो यस, वंस इन अ डे अपडेट होता है ये, मतलब आफ्टर मार्केट होता है ये अपडेट. तो आपको मतलब ये समझ लीजिए मार्केट खुलने से पहले डिसीजंस देखने को मिल जाएंगे. उसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और आप इसके ऊपर अपना जो भी डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का. और मार्केट ओपन होने के पहले आप इसको चेक कर पाएंगे. मॉर्निंग तक ये अपडेट हो जाता है, रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में ये अपनी प्रेडिक्शंस दे देता है. फिर उसके बाद प्रेडिक्शंस उस दिन के लिए चेंज नहीं होगी, नेक्स्ट प्रेडिक्शंस नेक्स्ट डे आएंगी, ठीक है, वो ऑन द सेम टाइम. अब जो क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं फ्यूचर्स के ऊपर और ऑप्शंस के ऊपर भी प्रेडिक्शंस देता है. सो अभी नहीं देता है, अभी के लिए स्टॉक स्पेसिफिक ही है. ओवर टू यू मैन. Okay, so let's see some few examples from today's forecast that appeared in the today's Shoonya as a platform. We can see that the algorithm is, as we saw the slide at the beginning, was giving a positive forecast on the small caps, the Pansary and Global Vect. And we saw that they were in 5% high from this specific prediction. And that prediction was sent today to our clients. This is small cap. We can see only small cap stocks in here. And as Yaron mentioned earlier, we have the MTNL stock was given by the forecast on the 23rd of July. A forecast ahead of 7 days. Sorry, a positive forecast. And we see the high signal that this specific stock got, and the performance in 1 week was 20% and 118% in the last month. Another example from the last few days, from today actually, we're seeing from the mid cap, the two stocks, B-Box and Deep Pegford, that we can find here with high signal, and the predictability is quite good, and we can see again the high returns that they're performing at this moment in the market. And the last example is the 1-year example. Again, always check the 1-year time frame. We can see here 3 stocks, CG Power, T-Painter, and Dixon that we talked about, by the way, in the last webinar. And we are seeing that they're all going up this time. So even if you're buying stocks for the shorter time frames, please check the 1-year time frame, the 3-month time frame,
because there we can find high predictability and high signals. And of course, after subscribing to the service, you are getting all the time frames and all the assets class from the small cap, mid cap, and large cap. Actually, everything is open to you. You can see the indexes, you can see all kind of stocks by subscribing to the service. Okay, go ahead and translate, Keshav, please. यस यस श्योर सो ये वाला पेज तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें जो आज की ही अगर हम परफॉर्मेंस की प्रेडिक्शंस की बात करें तो पंसारी और ग्लोबल वेक पर हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला है आज ही प्रेडिक्ट किए हैं 3 डेज के लिए और MTNL पर एक महीने से बुलिश है आई नो फर्स्ट का प्लेटफॉर्म और यहाँ पर जो है एक महीने में अराउंड 118% के रिटर्न MTNL पर देखने को मिले हैं और वीकली बेसिस पर लगभग 21% के रिटर्न जो है हमें देखने को मिले हैं सो नेक्स्ट पेज की अगर बात नेक्स्ट प्लीज प्लीज सो नेक्स्ट हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए गए थे सो उसमें भी हमें ब्लैक बॉक्स और दीपक फर्टिलाइजर पर हमें एक अच्छा साइड मूव देखने को मिला है जो प्रिडिक्शंस है वो 1 मंथ के टाइम फ्रेम के लिए बट 1 डे पर भी आपको इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें एक साल की टाइम फ्रेम पर तो सीजी पावर दीपक नाइट्रेट डिक्सन टेक्नोलॉजी ये वो शेयर्स थे जिन्होंने आज ही के दिन में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है डिक्सन में करीब 3% के हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहे हैं दीपक नाइट्रेट में करीब 2% के और सीजी पावर में 1% का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम Okay, so you can get all the things that we saw right now. That you can get the daily forecast from the Shoonya platform, the 6 time frames for all the stocks. For I remind you, 3 days, 7 days, 2 weeks, 1 month, 3 months, and 1 year. And the indices forecast, the customized AI forecast that actually examine your portfolio on a daily basis. After buying the stock, you can see what the AI think about the stocks. Specific stocks. So you're getting all this for 799 Indian rupee for a month. It's a special price for today. The price may be rising in the next few days, so take advantage of this special webinar sale. You can do it through Shoonya platform or through the chat, and we're gonna share some links that you can join the service. Just for you to know, in the English side, these specific packages they cost much more, as you can see here, around $180 for a month, and through Shoonya, you get it in a pretty discount price for 799 Indian rupee for a month. You get again all the things that we talked about. All the examples that you see are open for you by subscribing to this specific sale. सो आप शून्य के अगर एक्सक्लूसिव यूजर्स हैं तो आपको जो है ये आई नो फर्स्ट का जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ 799 रुपीज पर मंथ में एक्सेस करने को मिलेगा जिसमें आपको सभी टाइम फ्रेम्स की जो भी सिग्नल्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटीज हैं जो भी स्टॉक्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे सभी कैटेगरीज के चाहे वो स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप हो और जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी आपकी जो भी सिग्नल्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटीज हैं वो भी आपको चेक करने को मिलेगी 799 पर मंथ का इसका भी ऑफर चल रहा है जो कि कुछ टाइम में ओवर हो जाएगा अगर हम आई नो फर्स्ट की वेबसाइट से इस पूरी सर्विसेज को लेते हैं सो इनका अलग अलग कैटेगरीज में है पूरा फुल फ्लैश तो ये देते नहीं है एक ही बार में सो अगर हम सिर्फ लार्ज कैप का लेना चाहते हैं तो $199 पर मंथ का है उसके बाद $179 $169 मतलब लगभग अगर हम देखें तो $180 पर मंथ का इनका चार्जेस है सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो कि हम अगर शून्य पर बात करें तो सिर्फ 799 पर मंथ देकर आप आई नो फर्स्ट के प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं over to you. Please review the chat window. All the links that Ben mentioned are available there. So whether if you're using the mobile platform, on the desktop platform, you have all the links. And basically you can also compare
The regular prices of the Indian packages that are available in our website with the prices that are available for Shoonya clients only, basically. सो जितने भी लिंक्स हैं इसको एक्सेस करने के और सब्सक्रिप्शंस को लेने के, वो सारे हमने चैट विंडो में डाले हुए हैं। आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही आप चेक भी कर सकते हैं आई नो फर्स्ट की वेबसाइट पर। अगर आप इंडियन स्टॉक्स के जो पैकेजेस लेते हैं तो उनकी क्या प्राइसिंग है, और शून्य पर अगर आप उसको लेते हैं तो आपको कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है। सो कहाँ वहाँ पर अगर हम देखें तो अराउंड $180 का है ये पर मंथ का, बट आप शून्य पर इसको सिर्फ ₹799 पर मंथ पर यूज कर सकते हैं। सो लिंक्स दिए हुए हैं चैट विंडो पर, आप वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। All right, so I'm going to review with you shortly some of our artificial intelligence strategies that we use to institutional client, basically, and giving you examples of the ability of the algorithm. We're going to review two short strategies just to show you how can we use the algorithm different ways. So here we can find some different strategy that we are providing to institutional clients. If it's a long, short SPY strategy, while we're just going long or short once a month on the SPY itself. Long only strategy, basically focusing on the best stocks from the S&P 500, the best 40 stocks from the S&P 500, and involving indices in it. And sectors and other strategies, the long short sectors and industry strategy, while the algorithm provides us in a monthly rebalancing the best sectors and industries to be in, and we can see the returns comparing to the S&P in those different 4 years of trading. And two main strategies that I want to focus today is the high performance strategy. The algorithm is giving us from the S&P 500 the best 20 stocks on a monthly basis. Every month, the algorithm provides the best stocks to buy for long or to short from the S&P 500. We can see this strategy is provided a return of almost 380% in 4 years, 4 years, sorry. And the strategy that we are using for the Meitab, our institutional Israel client, that is actually a mutual fund, a live mutual fund for the clients. So this specific strategy made almost 203% in the last 4.5 years. So I'm gonna review them quickly. ओके सो हम अगर बात करें एआई की स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, तो अभी इंडियन मार्केट में अभी के लिए सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक है, बट आने वाले टाइम पे हमें इसका फुल फ्लैज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये फ्यूचर ऑप्शंस और स्ट्रेटजीज भी आपके लिए बताएगा। सो अभी अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, जो ओवरऑल मार्केट में हमें देखने को मिल रही है, तो जहाँ पर आपको 33% का रिटर्न दिखाई दे रहा है S&P 500 में, वहीं 140% के रिटर्न जो है वो आयनो फर्स्ट ने दिखाए हैं। और सिर्फ लॉन्ग की साइड की बात करें, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी पे ये था, लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग साइड पे 45% के रिटर्न है S&P पे, और ओवरऑल आयनो फर्स्ट के 175% से ज्यादा के रिटर्न है। और सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज स्ट्रेटजी पे बात करें तो वहां पर ओवरऑल रिटर्न जो है 484% की है, और बेंचमार्क रिटर्न अगर हम देखें तो वो 33.41% के ही है। सो उस वे से हम देख सकते हैं कि आइनो फर्स्ट कितना प्रॉमिसिंग रिएक्ट करता है अपनी प्रेडिक्शंस के ऊपर। सो परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज हैं, बेस्ट 20 S&P 500 स्टॉक्स में से तो S&P 500 का रिटर्न 47% का है, और आइनो फर्स्ट का जो रिटर्न है वो 377% का है। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड जो था उस
जो AI पावर्ड म्यूचुअल फंड था उसमें लॉन्ग्स के रिटर्न्स जो हैं वो 203% के हैं, वही बेंचमार्क के जो रिटर्न है वो 61% के हैं। तो मतलब आई नो फर्स्ट हमेशा बेंचमार्क से आपको 3-4 टाइम्स का आपको इसमें ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडाइसेस। यस, ओवर टू यू। Oh, okay. So we're gonna check shortly the high performance strategy while the algorithm picks 20 stocks on a monthly basis, stocks for long or stocks to short. We can see the yearly return in each and every year compared to the S&P performance. The blue line actually represents the strategy in those 4 years from the January 2020 up until the end of 2024. And we can see the outperformance of the algorithm compared to the S&P by finding the best stocks from the S&P 500, focusing on best 20 stock from the S&P 500. We're succeeding to outperform the benchmark each and every year. And those stocks are we're taking actually from the S&P 500 universe, but in the same way, you can use it from the Indian market if you're focusing on the best stocks by predictability and signal, and actually made your own strategies. Here we can see a part of the live portfolio from February. Those 20 stock, well, the algorithm chose for a period of 1 year, actually performed a 7.4 return in a 1 month period. And we can see a lot of semiconductor stocks, some communication, Disney consumer stocks, General Motors, a very variety kind of stocks that appears in this specific portfolio. सो आई नो फर्स्ट की कुछ हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जहां पर ये अपनी परफॉर्मेंसेस और अपनी स्ट्रेटजीज दिखाते हैं। आई नो फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबल मार्केट पर भी रिसर्च देने का काम करता है। सो ग्लोबली हमें रिसर्च देखने को मिलती है और वहाँ से जो भी अपडेटेड हमें होते हैं वो परफॉर्मेंस भी हम यहाँ पर इसकी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैन। यस, सो ये कुछ हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज हैं आई नो फर्स्ट की आपकी स्क्रीन पर। सो फिलहाल ये अभी बाहर की मार्केट्स में ही अवेलेबल है, बट इंडियन मार्केट में भी जल्दी हमें ये सारी स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। यस, यस, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये पोर्टफोलियो ट्रैकर है आई नो फर्स्ट का, जहां पर हम जो है रिटर्न्स देख सकते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है, जो आई नो फर्स्ट ने पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया है, उसके हिसाब से ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट the next strategy is again the mutual fund that we talked about, that is actually live for Israeli clients that we did with Meitav. This strategy is actually combining if the best 40 stocks from the S&P 500, the best 2 industries from the S&P 500 universe, industries such as home builders or retail or energy. So in each and every month, the algorithm picks 40 stocks and 2 best industries, and this is how we outperform the market. And we can see the actual return each and every month here of the algorithm strategy compared to the S&P 500, and even see the 40 stocks that chosen in the last month to outperform the market in almost 2%. या सो इजराइल मार्केट में भी किस तरह से परफॉर्मेंस रही है आई नो फर्स्ट की, वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ओवरऑल रिटर्न्स जो हैं वो 200% से ज़्यादा के हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके बेंचमार्क की, तो वहाँ 61% के रिटर्न थे, मतलब वही 3-4 टाइम्स
के रिटर्न्स जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं आयनो फर्स्ट की प्रोडक्शंस के बेसिस पर। सो म्यूचुअल AI बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। इस बैन ओवर टू यू। Okay, so if any hedge funds want to contact us, please contact Shoonya team or us to provide those specific strategies. And so as Yaron said at the beginning, we're providing a lot of different forecasts for different stocks. So we also provide, of course, forecasts for the US market, as we can see here. From the US stocks exchange, from the entire US market, you can see different stocks and the performance in the last few months. And we also provide the crypto-based forecast, world indices, commodities, currencies, and of course in different regions around the globe. If it's the European Stock Exchange, Japan, Italy, Australia, Hong Kong, China, and every big stock exchange around the globe, we are providing a forecast too, and of course the Indian market. यस सो आइनो फर्स्ट जो है वो जैसे मैंने बताया ग्लोबली अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है लाइक यूएस स्टॉक्स पर नेक्स्ट सो क्रिप्टो पर भी फोरकास्ट आती हैं। इसके साथ ही आप इंडाइसेस पे फोरकास्ट देख सकते हैं, वर्ल्ड इंडाइसेस पे कमोडिटीज फोरकास्ट देख सकते हैं, बट कमोडिटी फोरकास्ट इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी। करेंसी फोरकास्ट अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे वर्ल्ड मार्केट पर, इंडियन मार्केट्स में नहीं है। यूरोप की मार्केट में ये अपने परफॉर्मेंस को अपनी प्रेडिक्टिबिलिटी एंड सिग्नल्स देते हैं, इटली में देते हैं, और भी डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स में इनकी प्रेजेंस है जहाँ पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, शंघाई, जो शेंगन मार्केट में हर जगह हम जो है इनकी प्रेजेंस देख सकते हैं। सो इंडियन मार्केट में आप इसका यूज कर सकते हैं शून्य के साथ, और इंडाइसेस पर भी जो है आपको यहाँ पर शून्य प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी स्टॉक्स की प्रेडिक्टिबिलिटी और सिग्नल्स देख सकते हैं। जो भी स्टॉक रिकमेंड करते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर आपने अपनी थोड़ी रिसर्च जरूर करनी है, अपने टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, जो भी आप एनालिसिस करते हो, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, व्हाटएवर जो भी आप फॉलो करते हैं, हर चीज के ऊपर आपने अपनी रिसर्च एक बार करके ही अपने आगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। All right. So in the last webinar, the one that was in our last webinar that happened in June 13, we gave you the prediction for the next month of the Indian market. The algorithm actually colored most of the indices in green. We can see a positive forecast for the Nifty 50. For the Nifty small cap, from the Nifty Alpha 50, the mid cap, and we saw a negative forecast for the Indian VIX, the NIFT VIX that we can see here in the bottom. You can see the negative 178 signal that this specific forecast got, and the results in this month were quite positive. We can see the Nifty 50 with almost 6.5%, and the other indices went up by 5 and 0.5 and more percent in this specific time from the last webinar. So the last prediction was pretty successful. And let's see what the algorithm thinks about next month. And again, we are seeing a pretty green and good forecast for the next month. In the top, we can find the Nifty IT, the information technology sector that the algorithm actually really likes now. We have the Sharia 500 index that we can find here. Again, I'm putting more weights to the high predictability, as we can see here, 0.7, 0.47, and 0.46 that we can find in the top of the forecast. Well, the Nifty 50 is still green.
as we can see it here. And the Nifty VIX is in the lower part of the table, which is still good for the market. It says the volatility is supposed to go lower, so the market can go up. So right now, the forecast for the Indian market for the next month is pretty positive. So it's good to be in it. And for getting those best opportunities, again, I remind you the webinar sale for 799 rupee per month. You can get all the daily forecast, the indices, the 6 time frames, mid cap, small cap, large cap, customized AI forecast and for your holdings on a daily basis that analyze your holdings and tell you if you're supposed to sell it or hold it, or maybe buy even more from that specific stock. You get in the Shoonya platform for 799 Indian rupees. यप सो अब बात करते हैं कि लास्ट जो हमने वेबिनार किया था उस टाइम पर हमने क्या प्रेडिक्शंस दी थी सो आई नो फर्स्ट पे उस टाइम पे भी सिग्नल बुलिश थे जब लोग बात कर रहे थे कि अब जो है अब मार्केट में एक करेक्शन आएगी अब डाउन साइड आएगा जहां पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे हर जगह बात की जा रही थी कि मार्केट्स में हमें एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है करेक्शन आएगी प्रॉफिट बुकिंग होगी बट उस टाइम भी आई नो फर्स्ट ने इंडियन मार्केट्स को बुलिश बताया था सो वहां से लेके अभी तक निफ्टी पर हमें लगभग 6.5% के रिटर्न देखने को मिले हैं और साथ ही अदर इंडाइसेस पर भी हमें एक अपसाइड देखने को मिला है और इंडिया विक्स को नेगेटिव दिया था कि इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो कम होगा सो वहां पर हमें एक डाउन साइड देखने को मिला है अराउंड 15%। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आने वाला जो मंथ होगा वो कैसा होगा एज पर एआई प्रेडिक्शन तो आने वाला फोरकास्ट भी जो है वो अप ट्रेंड का ही दिखा रहा है कि यस आने वाले मंथ में भी अपसाइड देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा अपसाइड्स दिखा रहा है सबसे ज्यादा सिग्नल स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं निफ्टी आईटी सेक्टर के जहां पर हमें एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है और लो सिग्नल इंडिया विक्स को लेकर ही है विक्स कमजोर होगा तो ठीक है लेट्स सी अगले वेबिनार पे हम लोग इसे कहाँ लेकर पहुंचते हैं और एज यू नो अभी इस टाइम अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आई नो फर्स्ट को तो शून्य प्लेटफॉर्म पर ये 799 में अवेलेबल होगा स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी फ्यूचर ऑप्शंस करेंसीज कमोडिटीज पर अभी के लिए आई नो फर्स्ट इंडियन मार्केट में प्रेडिक्शंस नहीं देता है इन फ्यूचर ये सर्विसेज सारी आएंगी और इसकी आपको अपडेट्स भी शून्य पर मिलती रहेंगी अगर आप आई नो फर्स्ट से इसका पैकेज लेते हैं तो अराउंड $180 पर मंथ का है बट अगर आप शून्य से लेते हैं तो आपको ये 799 पर मंथ में मिलेगा मतलब अगर हम बात करें डॉलर के रेट में तो $10 से भी कम का पे पड़ेगा ठीक है सो अभी स्टॉक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक है और जो मेजर कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं Q&A में कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर या करेंसीज और कमोडिटीज पर देते हैं सो नहीं अभी के लिए नहीं देते हैं और डेली अपडेट होता है मार्केट खुलने से पहले आप अपडेटेड फोरकास्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को इसके लिए लिख भी सकते हैं और रिलेटेड लिंक्स जो हैं वो हमने चैट बॉक्स में शेयर किए हुए हैं जहां से आपको उसकी इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी और आप एक्सेस भी कर सकते हैं beta.shoonya.com के थ्रू भी और अपने मोबाइल ऐप से भी आप आई नो फर्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं सो ओवर टू यू मैम Yeah, okay, I think that was our last slide, and I think we can maybe answer some Q&A that we see from our clients that I see a lot of questions were asked during the webinar. I hope we actually answered most of them, but
let's try and go through some questions. Yeah, the first question that I see that is being repeated, a lot of people are asking how basically they can subscribe, how they can receive the AI power signals with the best opportunities on a daily basis, basically. Yeah, you So- can, Keshav, you wanna answer that? Okay, I will answer. मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो आप शून्य ऐप पर भी यूज कर सकते हैं और शून्य का जो हमारा वेब वर्जन है beta.shoonya.com, लिंक्स हमने चैट विंडो में डाले हुए हैं. मैं एक बार के लिए आपको और ये सब वापस डाल देता हूं ताकि आप यहाँ चैट विंडो से देख सकें. beta.shoonya.com के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप वेब वर्जन यूज करते हैं, और अगर आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो मोबाइल ऐप पर भी आपको आई नो फर्स्ट जो है वो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर जो मेन्यू है वहां पर सबसे टॉप डाउन में आपको देखने को मिल जाएगा. सो वहां पर आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप आई नो फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने की भी लिंक्स जो है यहाँ पर हमने डाली हुई है हमारे चैट विंडो में. और अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमें क्लाइंट सपोर्ट पर मेल भी कर सकते हैं, clientsuport@shoonya.com, और आप हमारी जो कॉलिंग लाइन है उस पर भी आप कनेक्ट करके अपनी क्वेरी जो भी रिलेटेड है वो रेज कर सकते हैं. कुछ कॉस्ट से रिलेटेड आ रहे हैं तो कॉस्टिंग इज 799 पर मंथ. अगर आप अभी इसको सब्सक्राइब करते हैं इट्स ऑन डिस्काउंटेड रेट 799 पर मंथ पर मिलेगा. अभी मंथली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है किसी भी अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई लंबे प्लान्स अवेलेबल नहीं है 3 मंथ 6 मंथ ईयरली. सो इन फ्यूचर हम क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली प्लान्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यारन सर. Yes, there is a question: which universes are going to be available to me after I'm subscribing? Are going to see opportunities from the small cap universe, mid cap universe, or large cap universe? ओके, सो आपको तीनों ही जो भी कैटेगरीज हैं मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, तीनों के ही आप एक्सेस कर पाएंगे. जो भी स्टॉक्स अवेलेबल जो भी प्रेडिक्टेड होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे सभी टाइम फ्रेम्स में, ऑल द 6 टाइम फ्रेम विथ तीनों कैटेगरीज ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. पूरा 799 में आपको एक फुल फ्लैज पैकेज मिल रहा है. जो आपकी होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर भी आपको प्रोडिक्शंस मिलेंगे, और ये सिर्फ आपको स्टॉक स्पेसिफिक है. अभी डेरिवेटिव्स पर आपको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे. सो यस, कुछ क्वेरीज हैं कि व्हेन एंड हाउ टू एग्जिट. सो आपके सिग्नल्स, अगर आप सिग्नल्स पे वॉच रखिए, आपने अगर एंट्री ली है आप स्टॉक्स के सिग्नल वॉच करते रहिए. अगर आपको लग रहा है सिग्नल कमजोर हो रहे हैं आप अपनी कॉल ले सकते हैं. आपको अपने एनालिसिस, तभी मैंने कहा स्टार्टिंग से कि आपको अपने एनालिसिस जरूर करने हैं. अगर आपको भी लग रहा है कि स्टॉक में एक ट्रेंड चेंज हुआ है तो आप वहां पर अपना एग्जिट ले सकते हैं. Yeah, so to answer the question, this is the only place around or the region around the globe that everything is going to be available for you after you're subscribing. The large cap, the mid cap, and also the small caps. The small caps, all the time frames are going to be available in this discounted pricing. On top of that, you are going also to receive daily forecasts for the different sectors, the indices in the market, and in the near future, also you're going to receive daily currencies, commodities, and other asset classes predictions that are going to be available also on the very same subscription. ओके, सो आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आपको स्टॉक्स के साथ इंडाइसेस के भी प्रेडिक्शंस देखने को मिलेंगे. एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है. सिंगल अमाउंट पे करके आप स्टॉक्स का, इंडाइसेस का, सभी की परफॉर्मेंस और सभी का आप प्रेडिक्शंस जो हैं वो चेक कर पाएंगे शून्य ऐप के थ्रू अगर आप ये लेते हैं, या शून्य के थ्रू अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो. ठीक है. सो कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हैं
कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। सो अराउंड 80% एक्यूरेसी के साथ आई नो फर्स्ट पे हम लोग गो ऑन कर रहे हैं, और इंट्राडे के लिए यूज नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस हैं कि इज इट यूज फॉर इंट्राडे, सो नहीं, इट्स नॉट फॉर इंट्राडे। बट हाँ, अगर आपको जैसे अभी आपने देखा कि 3 days, 7 days और 1 year की भी जो आपको प्रेडिक्शंस मिली है, वहां पर भी आपने इसको चेक किया है कि इंट्राडे में भी वहां पर आपको रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आप अपनी थोड़ा रिसर्च कीजिए, अगर आपको स्टॉक इंट्राडे में भी बुलिश लगता है या बेरिश लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बट दिस इज फॉर मिनिमम फॉर 3 days। ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो आपको किसी भी लिमिट तक हो सकती है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिग्नल्स आपको अवेलेबल होंगे। और रिकॉर्डिंग के लिए यस, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी मेल पर, हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। सो इस वेबिनार को आप वहां से भी दोबारा सुन सकते हैं। यस यारोन सर, एनी मोर क्वेश्चन टू आंसर? Yeah, there is another question. If there is a commitment with the subscription, everything is without the commitment, you can try the service for several months, and you can keep it if it's useful for you. And everything is available by utilizing the links that are on Shoonya website and also on the chat, on the webinar chat. या सो जो भी आपको वेबिनार के लिंक्स और इसकी रिकॉर्डिंग्स है वो मिल जाएंगी, और हम आपके लिए इन फ्यूचर, जैसे मैंने बताया कि थोड़े अलग क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्लान्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन। या आंसर। I see they ask if you can use it for intraday or for the short time frames. The forecast is the shortest time frame is for 3 days, but again, because it's get update on a daily basis, you can use it for the next day, of course. But again, as we advise during this webinar, we are actually telling you to focus not only on the shorter time frames, but also for the longer time frames. Even if you want to trade for the next day or 3 days or 2 days, take a look at the longer time frames, stocks that are there or in multiple time frames. Like for example, if you can see stocks that in the 3 days, in the 7 days, in the 14 days, and in the longer time frames as well, it's even better. So try to focus on the long time frames, on the high predictability level, which is really important. It's even more important than the signal. Try to focus first on high predictability, and then focusing on the best signal. And I saw another question is, what is the range of the signal? The signal is actually from minus infinity to infinity. It's going all across the assets, as we said, and the signal help us to rank the assets from the best asset with the highest predictive movement to the one with the lowest signal that represent movement downwards, going down, the asset that's supposed to go down. So use the signal, use the predictability, give more weight to the predictability, and try to focus on the longer time frames, even if you're trading for the 1 day, 3 days, even 7 days. Give the longer time frames some special weights. Yeah, so Ben, most of the questions I have answered earlier. I also took 3 to 4 questions in each time. So yes, okay. So कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस जो इस चीज से रिलेटेड हैं कि सिग्नल और प्रेडिक्टिबिलिटी, तो सिग्नल्स की कोई रेंज नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम्स में आपको अलग अलग सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। सिग्नल्स की जो सिग्नल जितना ज्यादा होगा वो उतना टॉप पे आपको देखने को मिलेगा।
और प्रेडिक्टिबिलिटी का यूज करना है आपने कि कितनी ज्यादा जितनी ज्यादा प्रेडिक्टिबिलिटी है उतनी ज्यादा उस स्टॉक की स्ट्रेंथ है उस डायरेक्शन में मूव करने की जिस डायरेक्शन से सिग्नल आ रहे हैं। अगर आपको किसी स्टॉक की प्रेडिक्टिबिलिटी 0.8 दिखाई दे रही है तो इट मीन्स के 80% टाइम्स जो है वो पिछले जब भी प्रेडिक्शंस हुई हैं उसमें 80% टाइम्स जो है इस स्टॉक ने उस डायरेक्शन में मूव किया ही किया है। सो ऐसे अपने हायर प्रेडिक्टिबिलिटी पे भी ध्यान रखना है और साथ ही आपने ये भी देखना है कि सिग्नल्स किसके ज्यादा आ रहे हैं। तो जहाँ सिग्नल्स ज्यादा है, जहाँ प्रेडिक्टिबिलिटी ज्यादा है, उन स्टॉक्स के ऊपर आप जो है अपनी रिसर्च जो है वो आगे और बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टॉक्स होंगे जहाँ पर आपको प्रेडिक्शंस 1 की मिलेगी, मतलब अगर 1 की प्रेडिक्शन है इट मीन्स कि जब भी मॉडल ने सजेस्ट किया है कि स्टॉक में बाइंग मूवमेंट आएगी 100% उसके अंदर जो है अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिसमें ये है कि आप अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर सिग्नल्स और प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं। सो वो आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आई नो फर्स्ट के ही होल्डिंग टैब में आपको उसके जो भी सिग्नल्स हैं और प्रेडिक्टिबिलिटी है वो देखने को मिल जाएंगे। Yeah, and this is, final words for this webinar, Kasha. This is my tip as well. The most important indicators or indicator, if I need to choose one indicator, I would choose the predictability. Utilize the predictability indicator. This is what the algorithm is trying to optimize on a daily basis. Focus on the most predictable assets. As Ben said, even if you're using the algorithm, the AI algorithm, to identify opportunities for the short term, go over the long-term predictions, focus on the most predictable assets, and utilize the daily prediction. The algorithm is generating the predictions on a daily basis, so try to log in on a daily basis to the platform to identify the most recent opportunities for the next trading days. सो आप जैसे प्रेडिक्टिबिलिटी को हमने फोकस करना है, हमने ध्यान रखना है ऐसा कोई भी स्टॉक, ऐसा कोई भी शेयर हमें जो कि अधिकतर टाइम फ्रेम्स में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन में भी है, 7 दिन में भी है, 14 दिन में भी है, 1 महीने में भी है, इस पर बुलिश आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं, सिग्नल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर वॉच रख सकते हैं। साथ ही साथ आपने इस चीज पर भी नजर रखनी है, डेली आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कीजिए ताकि आपको पता लगेगा कि किस स्टॉक्स में सिग्नल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और किस स्टॉक्स में सिग्नल्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो जिस स्टॉक में सिग्नल बढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी का सिग्नल आज 100 है, नेक्स्ट डे 120 हो गया, उसके 4 दिन बाद 180 हो गया, तो इट मीन्स कि आपको और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं और उसके ऊपर जो है आप उस हिसाब से अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। वो स्टॉक आपको 3 दिन में भी अवेलेबल है, 7 दिन में भी है, 14 दिन में भी, 1 महीने में भी है। तो ऐसे स्टॉक्स जो ज्यादा जगह पे अवेलेबल हैं और जिनकी प्रेडिक्टिबिलिटी ज्यादा आ रही है, उन स्टॉक्स को आप उन पे एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। Okay. Yeah, thank you first of all, Keshav, for your effort today and for your good work in this webinar. The deal that Ben shared is available today, and the subscribers are going to receive all the content for this fixed price. We are not promising that this is going to be the price in the future. So please take advantage of this subscription deal. And we are here for you. If you have any questions, feel free to contact the support. ओके, सो ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया एंड आपने अपने क्वेश्चंस आस्क किए। होप सो हम आपके क्वेश्चंस का अच्छे से रिप्लाई कर पाए होंगे और आपको जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो मेल के थ्रू शेयर कर दी जाएगी। ये वेबिनार का लिंक भी, रिकॉर्डेड लिंक आपको मिल जाएगा, आप जब चाहें इस वेबिनार को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो भी ऑफर्स अभी चल रहे हैं 799 पर मंथ वाला, वो उसकी कोई ऐसा इन फ्यूचर ऐसा है कि उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सो आप इसको सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द ताकि आप AI पावर्ड प्रेडिक्शन टूल जो आई नो फर्स्ट है उसका यूज कर पाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना पाएं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू यारोन, थैंक यू बैन,
it's a good product for our Indian market, and hope each and every investor should one should have tried this and see how this put an impact on their investment journey. So thank you so much. Thank you, Ben. Thank you, Aaron. Thank you, all the Thank you, audience. Prashant. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, शून्य पर बने रहने के लिए. Thank you so much. Thank you very much, Bye-bye. Prashant. See you in the next Thank you, one. Ben. Yeah, Thank you for sure. great webinar, Ben. Thank you, guys. Okay, Okay. thank Bye-bye. you. See Bye. you. Bye-bye.